So we are doing a very, very interesting topic, interpersonal and intrapersonal skills. So anyone, if you will make it interactive, and if you want to share anything from your side, what is your understanding of interpersonal skills? You can write in the chat box, or can they unmute, Preeti ma'am? They Yes, can yes, they answer. are having that Yeah, right. so They can please. unmute Yeah, so themselves. please, yeah, you could unmute yourself and you could share what is your understanding of interpersonal skills or intrapersonal skills. Anyone, because this is what we are going to be learning about today. So I'll just wait for 5 seconds. If I'm getting any response in the chat section, anyone, Participant, you can speak in Hindi also. M- You can speak in Hindi, Marathi. bilkul. Soft skills useful in life. Okay, I've got one response. Yes, thank you so much मैडम for that. मैडम And ऐसा सोशल yes, huh? एक ऐसा Social. सोशल कम्युनिकेशन जो वर्बल और Abs- नॉन वर्बल दोनों वे से किया जा सकता हो. Absolutely, absolutely correct. तो सबसे पहले आपने क्योंकि कम्युनिकेशन कहा, तो हम कम्युनिकेशन से ही शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है. Yes, communication and good listener, absolutely. So this is what we are going to be learning about, and many other aspects. So communication क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं. ये एक प्रोसेस है. और क्या प्रोसेस है ये? Of information sending and information receiving. So, agar if I'm talking about something, but it is not understood. So, I may be talking about XYZ, but I may be talking to my heart's content. I have prepared very well and I'm talking endlessly because I have a lot of information, I have a lot of knowledge, but somehow it is not being understood. So if it is not being understood, then it is not communication. I'm just talking and talking and talking. There's a difference between talking and communicating. Talking is something which we have been doing from the childhood. जब से हम पैदा हुए हैं, छोटा बच्चा भी बात करना जानता है, वो भी समझाना जानता है, हम भी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. तो ये कम्युनिकेशन क्या नई चीज आ गई? तो हम बातें तो करते हैं, पर वो बातें कितनी समझी जाती हैं वो हमें पता नहीं चलता है. तो जब मैं बात भी करूं और जब मेरी बात सही तरीके से समझी भी जाए, तो उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहेंगे. और अगर खाली मैंने बातें की और मेरी बातों को किसी ने नहीं समझा, तो आई हैव जस्ट स्पोकन, आई हैव जस्ट टॉक्ड, but I have not communicated. And because we are educators, so it is very important for us to understand the process of communication, because we are speaking for a purpose. अगर हम क्लासरूम में भी बोल रहे हैं तो उसका एक पर्पस है. अगर हम मीटिंग रूम्स में बोल रहे हैं, कलीग्स के साथ बोल रहे हैं, घर पे बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, कहीं भी हम बातें कर रहे हैं, तो उन बातों का एक मकसद है कि वो बातें सही तरीके से समझी जाएं. और इसलिए ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बात समझी नहीं गई, if somebody is not understanding me, तो खाली समझ नहीं पा रहे हैं ये नहीं हो रहा है. हो क्या रहा है? गलत समझा जा रहा है. अंडरस्टैंडिंग तो बनी ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि जो मैंने नहीं कहा था वो समझा गया और जो मैं कहना चाह रही थी उसको समझा ही नहीं गया. तो कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज what I want to say should be understood in the right manner. It should not be misunderstood, because either understanding is there or misunderstanding is there. So to avoid misunderstanding, we should become good communicators. So it is important. और हम कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम खाली शब्दों से ही नहीं बोलते हैं. जैसे यहाँ पे भी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो खाली मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस भी आपको दिख रहे होंगे, मेरी आवाज की टोन भी आपको सुनाई दे रही है, मेरे एक्सप्रेशन, सब चीजें कम्युनिकेट कर रहे हैं. खाली शब्द पे ही आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे, आप पूरी ओवरऑल देख रहे हैं कि एनर्जी कैसी है, इंथुजियाज्म कैसा है. देन एक्चुअली कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस. तो वर्बल भी चल रही है और नॉन वर्बल भी चल रही है. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम,
we as educators have to be extremely careful of this fact that if people are watching us, there are students who are looking at us, and the way I am communicating, whether verbally or non-verbally, everything is being watched. और देखते कि जो हम कर रहे हैं उसी से दूसरे सीख भी रहे हैं. So it becomes even a greater responsibility on me to be speaking the right way and communicating the right way. So ये देखिए, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक सेंडर है. जैसे मैं एक मैसेज भेज रही हूँ आप तक, आप उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके कुछ इंटरप्रेट भी कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि एग्जैक्टली जब आपका इंटरप्रिटेशन वही होता है जो मैंने सेंड किया है, तो फिर मैसेज इज करेक्टली इंटरप्रेटेड. पर अगर मैं कुछ मैसेज भेज रही हूँ और आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो गया, तो एवरीथिंग स्नैप्स. द मैसेज हैज नॉट बीन अंडरस्टूड क्लियरली. सो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पर इस कम्युनिकेशन में देखिए, जैसे मैंने what I mean, what I'm trying to say, and what you are understanding, if we are on the same platform, then wow, we are going good. But कहीं पर अगर ये mismatch हो गया, you are understanding what I'm not saying, or what I am saying, you are not getting that, then there is a mismatch. तो ये mismatch को सही करने के लिए we have to become a little more aware about the process, how we are communicating, how are we sharing our thoughts and ideas with each other. क्योंकि communication is all about sharing our thoughts, sharing our ideas, sharing our expression, sharing our beliefs, values. जिसमें मुझे विश्वास है, जो मैं हूँ वही मैं दूसरों को बताना चाहती हूँ. पर अगर वो सही समझे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सही समझा जा रहा है? तो मुझे जो फीडबैक मिलेगा, है ना? तो अगर लोग मेरी बात से अग्री कर रहे हैं, तो दे विल से वाओ, यस, यू हैव स्पोकन राइट, सो आई विल आल्सो फील कॉन्फिडेंट. बट अगर लोग कुछ मुझे ऐसा फीडबैक दे रहे हैं जो मैंने कहा ही नहीं था, देन आई एम गोइंग टू फील upset about it. Thank you so much. Thank you so much for your feedback, Prashant sir, because it is really very, very motivating, because your feedback is, then I also know whether I'm going in the right direction or I need to change something, right? तो ये छोटा सा communication का process है. पर ये चलता कैसे है? तो हम सबका जो बिहेवियर होता है, जो दुनिया के सामने दिखता है, जो हम लोगों के सामने अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न होता है. मतलब कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली व्हाट वी आर टॉकिंग, कम्युनिकेशन इज व्हाट वी आर. द वे वी ड्रेस अप, वो कम्युनिकेट करता है. द वे वी वॉक, that also communicates. The way we stand, the way we sit, the way we greet, the way we look, everything is communicating. So आपका पूरा personality is your communication pattern. It's talking something. तो इससे पहले, जैसे आपने कितनी बार गेस किया होगा कि रूम में अगर कोई आता है, वो पर्सन बोले ना बोले, उससे पहले हम धारणा बना लेते हैं कि दिस पर्सन इज लाइक दिस. स्टूडेंट्स आते हैं, कलीग्स आते हैं, हम पहले ही उनको देख के भांप लेते हैं कि मेरा अनुमान इस पर्सन के बारे में ऐसा है. उसने तो मुंह भी नहीं खोला. हाउ डिड वी नो? Because we looked at the persona and there was something in the way the person talked or spoke or moved or some gestures or expressions कि हमें लगा, oh, this person is going to be like this. और जहां पे वो जो बॉडी लैंग्वेज है या बॉडी वाइब्स हैं, जहां हमारे से मैच होता है, वी जेल विद दैट पर्सन. और कहीं कहीं हमें लगता है, ओहो, दिस पर्सन लुक्स लाइक दिस, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट अलोंग विद दिस पर्सन. उसने कुछ बोला भी नहीं है, बट वो कुछ कम्युनिकेट हो गया और हमें जो जेल नहीं किया है, तो आई मे नॉट गेट अलोंग विद दैट पर्सन. इट इज दैट इंपॉर्टेंट एंड दैट डीप. सो कम्युनिकेशन में हो क्या रहा है? तो ये दिस इज ऑल अबाउट आवर इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल. सो इससे हम टॉपिक पे आते हैं. तो देखिए, जो हमने सामने देखा बिहेवियर, जैसे मैंने अभी कहा, कोई पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, कोई कैसे बातें कर रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे ड्रेसअप हो रहा है, कोई कैसे एक्सप्रेशंस हैं, ये सब तो हमको दिख जाता है. That is a behavior that is on the surface. Surface पे आप देख रहे हैं, वो surface के ऊपर है. But surface के नीचे भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं.
तो ये जो नीचे हैं वो हो सकते हैं इमोशंस, वो हो सकता है सैडनेस, फियर, हैप्पीनेस, सेल्फ रेगुलेशंस, सेंस ऑफ सेफ्टी, हंगर, कनेक्शन, सेल्फ एस्टीम, बिलोंगिंग, अटैचमेंट, सिक्योरिटीज है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, और जो हमें दिखाई देता है वो खाली बिहेवियर है। तो जब हम स्किल्स को समझना चाहते हैं या सोशल स्किल्स को समझना चाहते हैं तो हम खाली बिहेवियर को देखते हैं, और बिहेवियर है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे से व्यवहार कैसा करते हैं, दैट इज बिहेवियर। पर what the person is from inside, जो खाली मुझे पता है मैं अंदर से क्या हूं, जो मैं अपने आप से कम्युनिकेशन कर रही हूं, that is my inner self talking to me, that is intrapersonal। तो इंट्रा मतलब खुद की ही खुद से वार्तालाप, और इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे से वार्तालाप। जैसे आपके कॉलेज में अगर फंक्शंस हो रहे हैं, अगर आपका कॉलेज दूसरे कॉलेज के साथ कॉम्पीट कर रहा है तो इंटर कॉलेजिएट हो गया, और अगर कॉलेज में ही इंटर इंटर इवेंट्स चल रही हैं तो दोज आर इंट्रा कॉलेज इवेंट्स। तो विद इन वन सेल्फ विल बिकम इंट्रा, एंड आउटसाइड वन सेल्फ विल बिकम इंटर। Is this clear, the difference? What is intra, what is inter? Then we will come to how little more, more detail we will do about it. तो Yes, इंट्रापर्सनल ma'am. के लिए हम क्या बोलेंगे? जो मेरा अपने साथ स्किल्स है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो योर फीडबैक इज रियली इम्पोर्टेंट। तो जो मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, जैसे मैं खुद के लिए अगर खुश हूँ, मैं खुद से, अगर मैं खुद से खुश हूँ, खुद से कॉन्फिडेंट हूँ, खुद पे मुझे नाज है, खुद पे मुझे बहुत गर्व है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बाहर भी दिखेगा। और अगर मैं खुद से नाराज हूँ, खुद से अपसेट हूँ, खुद से परेशान हूँ, खुद से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो वो भी बाहर दिखेगा। तो इंट्रा और इंटर दोनों कनेक्टेड हैं। सेल्फ कम्युनिकेशन इज इंट्रापर्सनल, एब्सोल्युटली, एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स इज इंटरपर्सनल, सिंपली पुट। ऑल राइट। तो कितनी बार हम अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, हम अपने आप से किसी, अब जैसे देखा होगा आपने, अपने दो फ्रेंड्स की आपकी बातें हुई, उसमें कुछ ऐसी बात हो गई जो आपको पसंद नहीं आई। अब आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, हाउ, व्हाई डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट। अब आप अपने ही पीछे पीछे बातें करते करते अब आपने अपने से बहुत बातें कर ली। अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस फ्रेंड से बातें करेंगे तो कुछ नजरिया बदल जाएगा, बिकॉज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज नाउ अफेक्टेड योर इंटरपर्सनल। और वहीं अगर हम अपने से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इट इज सो वंडरफुल टू बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, आई हैव रिसीव्ड सो मच ऑफ विजडम, इट्स सो, learning on sharing of knowledge is so profitable for both of us, and so many positive things. Next time when you meet that friend again, your energy is going to be different. So intrapersonal and interpersonal, that deeply they are connected. All right, so let's understand a little more about it. Here you can see when I'm talking, the first example is of, लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में, फर्स्ट एग्जाम्पल पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, जानबूझ के नहीं लिखा है। सेकेंड एग्जाम्पल पे लिखा है। देर आर टू इमेजेस यू कैन सी, व्हेन इन वन इमेज मिरर है, जो मिरर आपसे बातें कर रहा है, और दूसरे में हम दूसरों से बातें कर रहे हैं। तो फर्स्ट, यस यस, सो द फर्स्ट इमेज इज व्हाट? कम्युनिकेशन। ये जिसपे Intrapersonal. मेरा, हाँ, Intrapersonal, ma'am. yes, First the first image. image is of intrapersonal, where the mirror is talking to me, I am talking to myself. And the second image is interpersonal, what we are in the public, what we are in front of others, what we are in front of the society, in front of the relatives, in front of the family members. That is our interpersonal. And what we are when no one is watching, that is our intrapersonal. Okay, so this is important to understand. अब इसमें देखिए
क्या है ये? इंटरपर्सनल इज एन इंट्रापर्सनल इज एन इंटरनल डायलॉग विथ योरसेल्फ. और वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर. What can I do better? How can I achieve this? How much more effort should I put in? How can I, what have I done good? How do I evaluate myself? तो ये सब खुद के सेल्फ कॉम्प्रिहेंशन, सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जब दो लोगों के बीच में हम बातें करते हैं तो जब इंटरपर्सनल स्ट्रांग होगा तो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड. और कभी भी ऐसा कहा जाता है कि हम हमेशा इनर से आउटर जाते हैं. हम खाली बाहर पॉलिश कर लें और इनर अगर मेस है तो दैट इज अ टेम्पररी चेंज. अगर इफ आई वांट टू अचीव एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, my inner self should be very strong, then my outer world is going to be much more shining. So examples, so interpersonal ho jayega jab it is essential for creating meaningful relationships and understanding different points of view. So self reflection kya hai? So jab hum deep introspection karte hain, we gain insight into us, our own inner world, and our thoughts and our emotions. So my strengths, my weaknesses, and also understanding what are the reasons for my success, what are the reasons which are stopping me from becoming the person that I am or that I want to be. So self ke bhi चार reflections hote hain, dimensions hote hain. One is the self that I show to the world. One is what I want to be, ideal self. One is what I am, the true self. And one is what I want to be. So different dimensions of self होते हैं और इसलिए self में भी बहुत conflict चलता रहता है. तो understanding the self is very important for having a strong self awareness. And when self is strong, intrapersonal is strong. And when intrapersonal is strong, interpersonal is strong. So these are both directly interdependent. आपका इंटरपर्सनल अच्छे होने से भी आपको बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है एंड योर इंटरपर्सनल इज वेरी हैप्पी. इट वर्क्स बोथ द वेज. ऑलराइट, तो देखते हैं अभी इसमें नेक्स्ट. ये देखिए जो हमारी सेल्फ टॉक चल रही है, हमारे क्वेश्चंस एंड सजेशंस और सेल्फ कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वर्बलाइजेशन चल रहा है, दैट इज ऑल कमिंग इन इंट्रा. ओके. एंड जो हम दुनिया के सामने कर रहे हैं, तो जैसे हमारा बिलीव्स क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे एटीट्यूड क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. अब देखिए, फॉर सम रीजन इफ आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ, देन आई विल बी माय interpersonal is also going to be directly affected accordingly. But if I'm not happy where I'm standing today, that will also reflect in my interpersonal. तो इसलिए जैसे हम जो सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, जनरल थिंकिंग है हमारी, वो आपकी इंट्रापर्सनल. हम कुछ अपने लिए अगर डायरी लिख रहे हैं, जर्नल लिख रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, व्हाट एम आई, दैट इज अगेन योर इंट्रापर्सनल. और जैसे हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, that is also your own self talking to you. So we talk to ourselves. So it can be in three forms: the way we think, the way we write about ourselves, and the way we express about ourselves. इसीलिए कहते हैं ना, self introduction is very important. Because हम किसी को भी क्यों बोलते हैं self introduction? Self introduction से पता चल जाता है कि how the person is thinking about oneself, how the person is presenting oneself. So self introduction में सारी चीजें हो गई, जो आपने सोचा अपने बारे में, जो लिखा अपने बारे में, उसको आपने वोकलाइज कैसे किया. और अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, इम्प्रेसिव है और कॉन्फिडेंट है, तो हमें लगता है ओके, दम है मतलब अच्छा इंट्रा पर्सनल चल रहा है, सेल्फ टॉक इज गोइंग गुड. और अगर नहीं चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम इज गोइंग डाउन. तो अब मैं आपको ये इमेज दिखा रही हूँ. व्हाट इज आवर परसेप्शन, हाउ डू वी लुक एट थिंग्स. And many a times we think the way we look at things is the right way. So आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि कितनी बार हमारे जो सोचने का नजरिया है वो डिफरेंट भी हो सकता है. So what do you see on the screen? मैं मेरी
लेडीज फेस है और मेल मेल भी दिख रहा है। हाँ, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है शायद। Hello, ma'am. There is one woman which I can see, and a man who is standing, I think. Yes, there's a man who is playing a bagpiper, and there is an image of a woman also, which is hidden, but it is there. So both the images are there. It is an illusion, but we can see clearly both the images. कई लोग होंगे जो नहीं भी देख पाएंगे both the images. So perception क्या होता है? The way we look at the world. तो सबने अपने अपने परसेप्शन के चश्मे लगा रखे हैं. So if I am wearing spectacles of a certain number, मेरे चश्मे से मुझे दुनिया अच्छी दिखेगी. अगर मैं किसी और का चश्मा पहन लूं तो मुझे दुनिया नहीं दिखेगी, या कोई और मेरी नजरों का चश्मा पहन ले तो उसे दुनिया नहीं दिखेगी. तो परसेप्शन इज वही नजरिए का चश्मा जो हमने पहन रखा है, वो मेरा है. तो उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और हमने अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन कर दिया है. सेंसरी इंफॉर्मेशन माने हमारे जो सेंसेस हैं, जो हमने देखा, जो स्मेल किया, जो टेस्ट किया, जो टच किया, जो सुना, जो महसूस किया, उसके हिसाब से मेरा परसेप्शन बन गया और उसके हिसाब से मैंने अपने एनवायरनमेंट की दुनिया बना दी. पर होता क्या है कि हमारा ब्रेन बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिसीव करने, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है आसपास, और हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रिसीव नहीं कर सकते. तो हम डिलीट कर देते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन को और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना नजरिया बना लेते हैं. तो देखिए, अब क्योंकि बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन आ रही है, एक्सटर्नल इवेंट्स बहुत सारी आ रही हैं और बहुत रैपिडली आ रही हैं, टू मेनी थिंग्स आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम. सो वो सारे मेरे दिमाग में अंदर जा रही हैं. अब उनके लिए फैक्टर्स क्या क्या हैं? टाइम है, लैंग्वेज है, मेमोरीज हैं, ट्रेट्स हैं, डिसीजंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज, बिलीफ, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं. तो मैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं स्टोर कर सकती. तो मैंने क्या करना है, मेरा दिमाग इज वेरी स्मार्ट. वो कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा, कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देगा और कुछ इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर देंगे. तो जो मुझे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक लगा वो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली और वो मेरा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू मी, this is the world, this is how it functions, and this is how things stand. और उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से मेरा मूड भी चेंज हो जाएगा. my emotions will get affected, and when my mood or my emotions get affected, my body language also changes. So it can be positive or it can be submissive, it can be negative, it can be in any form. अब वो जो मेरी बॉडी लैंग्वेज बन गई, उससे मेरा बिहेवियर इंटरपर्सनल हो गया. तो देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल इवेंट से यहाँ गया, मेरे दिमाग में ये सब इंट्रापर्सनल चल रहा है और इस इंट्रापर्सनल ने मेरे मूड को चेंज किया. ये जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली दिस इज द इंट्रापर्सनल, द सेल्फ टॉक दैट आई एम गिविंग टू माई सेल्फ. और उससे मेरा स्टेट, माई इमोशंस, माई मूड, माई well-being changes. It can be good or it can be bad. It can be positive, it can be negative. और उसके हिसाब से मेरी बॉडी लैंग्वेज, फिजियोलॉजी दिखता किसमें है? वो बॉडी लैंग्वेज में. कोई गुस्सा है तो कैसे दिखता है आपको? एक्सप्रेशन से. कोई अपसेट है तो कैसे दिखता है? एक्सप्रेशन से. कोई खुश है तो कैसे दिखेगा? एक्सप्रेशन से. कोई बहुत ही जॉयस, एक्सूबरेंट है, एनर्जेटिक है, एक्सप्रेशन से. तो ये सब फिजियोलॉजी जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज है और उससे फिर आपका डायरेक्टली इंटरपर्सनल अफेक्ट हो रहा है. सो इज द कनेक्शन बिटवीन इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल क्लियर? पहले हमने समझा व्हाट इज कम्युनिकेशन, देन वी कम्युनिकेट एट टू लेवल्स, इंट्रा एंड इंटरपर्सनल. फिर हमने देखा कि हाउ आर दीज टू कनेक्टेड, एग्जैक्टली व्हाट इज टेकिंग प्लेस इन माय personality. Yes. Okay. Thank you. Thank you so much. Truly matters. Okay. Thank you. So ये हमारा, यहाँ तक हमने इसको समझा.
तो जब भी हम बोल रहे हैं, that is why I'm saying that body language plays an extremely important role. In fact, what you say, your words carry only 7% of the weightage. So I may be having a storehouse of information, but if I'm going to be speaking like this without any energy, without any enthusiasm, without any expression, will you be listening to me? I'm sure no, nobody would want to listen to me. My words may be the same, but आप सुनना ही नहीं चाहेंगे उन शब्दों को. तो मेरे शब्दों की बहुत छोटी सी अहमियत है, क्योंकि उन शब्दों पे जब तक हमने बॉडी लैंग्वेज सही नहीं की, उनकी टोन सही नहीं की, तब तक मेरी शब्द कोई नहीं सुनना चाहेगा. हम किसी के भी शब्द नहीं सुनना चाहते, हम भी नहीं सुनना चाहते. तो हमें जब वो राइट एनर्जी, राइट इंथुजियाज्म, राइट एक्सप्रेशंस, राइट बॉडी लैंग्वेज, राइट एटीट्यूड दिखता है, then we are interested in listening to the other person. तो communication जब भी हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, interpersonal, when we are talking to each other, we have to be very careful about these factors. क्योंकि हो सकता है हमें किसी की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, but the other person is not paying that much importance to me, because somewhere I like that person's communication style, but my communication style is getting rejected. So important thing to understand is words generate only 7% of the impact of communication. Voice tone does 38%, and body language is 55%. That means 93% is non-verbal or paraverbal. Thank you so much. And only 7% is pure verbal. So 7% is pure verbal, then paraverbal, then non-verbal. ये जब आपका पूरा packaging सही होता है, then your communication style becomes truly effective. So this is something we have to remember. So important क्या है, कैसे हमें पता चलता है whether I am doing the things the right way, whether I am communicating the right way, when I get the feedback. So your feedback here is extremely important, extremely motivating, extremely crucial, because आपके लिए वो एक छोटा सा एक आप खाली sign भेज रहे हैं, but that feedback matters. Because I am encoding certain information and sending it to you. You are decoding that information. But how do I know कि वो information decode हो रही है सही तरीके से नहीं? With your feedback. So when you are sending the feedback, then I know कि decode सही हो रहा है. That means encoding is okay. But if I don't get that feedback, I'll keep thinking, oh, there's something which is going wrong, not going the right way. It needs to change. Okay? So ये आपका communication message. देखिए एक sender है यहाँ पे encode हो रहा है channel. हम यहाँ पे एक दूसरे से, at least I can speak, you can see me, I can't see you, but I'm sending the message, you are decoding it, and then receiver decode करके you are sending the feedback. So this is how communication process goes on at all times, irrespective of where may be, wherever we may be. Even the silence speaks. अगर मैं आपसे पूछती रहूं कि feedback दीजिए, and if you don't give me the feedback, that also speaks कि भाई feedback देने लायक ही नहीं है, आप देंगे क्या feedback? So silence means that there is nothing good that is taking place. Or otherwise, even in the room, you will see that there are people who are not saying anything, but their body language is speaking everything. So silence also communicates. And I say that the best understanding is where the silence is understood, where unspoken is understood. That is where the best communication takes place. So you don't have to speak out everything. Okay, so how do we build great interpersonal and great intrapersonal relationships? Okay, do you want to learn about it? If you want to learn, then give a thumbs up.
ये तो हमने समझ लिया, इंटरपर्सनल क्या है, इंट्रापर्सनल क्या है, कनेक्टेड कैसे हैं, इम्पोर्टेंट क्यों है, सब हमने समझ लिया। बट फिर कुछ ऐसे वेज एंड मीन्स होने चाहिए थ्रू विच वी कैन एस्टैब्लिश। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, ऑल थम्स अप, रियली वेरी वेरी मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग। सो हम उनको कैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करें, है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड, एंड बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड, तो जो हम इंटरपर्सनल के लिए बोलेंगे वो भी इंट्रा के लिए काम आएगा, और जो हम इंट्रा के लिए बोलेंगे वो भी इंटर के लिए काम आएगा। तो दोनों चीजों पे हम जब काम करेंगे, देन वी कैन बिकम गुड, इफेक्टिव, बेटर कम्युनिकेटर्स। आई एम श्योर एवरीवन इज डूइंग कम्युनिकेशन with very effectively and doing great work there, but हमारे लिए हमेशा एक scope होता है to become even better. So let us understand how can we do that. Okay, तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखना चाहती हूँ, आप लिख सकते हैं इनको, और मैंने इसे लीडरशिप कर दिया है, अब स्किल्स नहीं है। यू बिकम लीडर ऑफ योर ओन पर्सनल लाइफ, लीडरशिप, है ना? क्योंकि वी ऑल आर लीडर्स, हम अपनी अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, तो हम अपने पर्सनल लीडर्स तो हैं ही हैं। और इंट्रापर्सनल में आई एम लीडिंग माय ओन लाइफ, सो आई एम अ लीडर इन माय ओन आईज, एंड इंटरपर्सनल बिकॉज आई एम लीडिंग अदर्स अलोंग विथ मी। सो इंट्रा एंड इंटरपर्सनल लीडरशिप, and leaders create leaders. So educators are leaders because you are leading a batch of students to victory, to help them achieve their goals. So educators say bade leaders kaun hai? You are the biggest, we all are the, I think, maximum impact making leaders. तो कैसे इसको हम और इफेक्टिव कर सकते हैं? सो 4 चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, यू कैन राइट दिस डाउन. First is the emotional bank account. Second is win-win. Third is empathetic listening. And fourth is perceptual position. अब बैंक मैडम अकाउंट आपकी क्या नेक्स्ट होता है? हाँ, मैडम आपकी नेक्स्ट स्क्रीन नहीं दिख रही है, शेयर नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख इट रही इज है मैम। विजिबल मैम, दिख इट रही है इज मैम। विजिबल। दिख रही है मैडम। दिख रही अगर है। आप मोबाइल पे हो तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, बट नहीं यहाँ दिख रही है मैडम, मोबाइल पर भी। दिख रही है ना? हाँ, हाँ तो हाँ। पर मुझे ये बताइए, बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट में जब हमारा फाइनेंशियल बैंक अकाउंट होता है, उसमें क्यों हम बैंक अकाउंट रखते हैं? Why do we have bank accounts in the bank? हम जैसे पैसों के बैंक लेन-देन में के लिए पैसे जमा रखते हैं। करते हैं वैसे बिल्कुल मैम सही है, वी पैसे प्लान के आवर जैसे ब्रेन में एक्सपेंसेस। जो है सौ हाँ, पैसे जमा करते हैं और पैसे जब चाहिए होते हैं तो निकाल लेते हैं, है ना? क्योंकि भाई एक डिपॉजिट है, वहां पे पैसों का डिपॉजिट है, तो पैसे निकाल भी सकते हैं। तो अगर मुझे निकालने हैं पैसे, तो मुझे पहले डिपॉजिट भी करने पड़ेंगे, तभी पैसे मैं निकाल सकती हूँ, नहीं तो अगर डिपॉजिट नहीं किया तो निकाल भी नहीं सकते, है ना? तो ये तो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट हो गया। तो इमोशनल बैंक अकाउंट में क्या होगा? इमोशनल बैंक अकाउंट में भी तो कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा ना, और क्या जैसे करना हमारे पड़ेगा? इमोशंस रहेंगे मैडम, वैसे ही हमारे चेहरे पर से वो सब दिखाई आएगा और हम दूसरों से बिहेव भी वैसे ही करेंगे। हाँ, तो इमोशनल बैंक अकाउंट में हम लोगों के अकाउंट में इमोशंस डिपॉजिट करते हैं, और कैसे डिपॉजिट करते हैं? व्हेन वी मेक देम फील गुड, तो हम डिपॉजिट करेंगे, एंड इफ यू मेक समबडी फील बैड, तो विथड्रॉ हो गया, इमोशंस विथड्रॉ हो गए। तो मुझे पहले क्या करना है? आई हैव टू मेक पीपल अराउंड मी फील गुड, and that can, so that I'm depositing. और जब मैं खूब डिपॉजिट कर लूं इमोशनल बैंक अकाउंट में, पीपल अराउंड मी आर हैप्पी बिकॉज आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर हैप्पीनेस, देन इफ आई से समथिंग, तो किसी को बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि डिपॉजिट इतना वास्ट है कि छोटी सी मैंने चीज अगर उसमें से विड्रॉ की, पीपल आर ओके विद इट। बट विड्रॉ करना ही क्यों है? why why not keep depositing?
सो जब हम डिपॉजिट करते रहते हैं तो इसके फायदे क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मेक अदर्स फील गुड, एंड बिकॉज अदर्स आर हैप्पी बिकॉज ऑफ मी, दे विल ऑल्सो पुट डिपॉजिट इन माई अकाउंट, है ना? तो ये तो एक म्यूचुअल लेन देन हो गया, कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं किसी को अच्छा फील कराऊं और वो मेरे लिए खराब कराएंगे, और अगर करेंगे भी तो एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, बाद में तो अच्छा ही लगेगा। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, दैट इज इमोशनल बैंक अकाउंट। सेकंड क्या है? थिंक विन विन। अब हम इसको एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले इमोशनल बैंक अकाउंट को समझते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ व्हाट इज इमोशनल बैंक अकाउंट? Yes, ma'am. आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिपॉजिट तो करते नहीं है पर विड्रॉ जरूर करते हैं। आजकल की दुनिया में यही हो रहा है, nobody deposits, everyone is asking for emotional support without putting any emotional support, और फिर वहां पे इंसान इमोशनल वैक्यूम हो जाता है, क्योंकि आप कैसे सपोर्ट करोगे जब डिपॉजिट ही नहीं है? तो हमें कुछ चीजें ऐसी पता होनी चाहिए कि जो इमोशनल डिपॉजिट को हेल्प करती हैं, जो बढ़ाती हैं, और ऐसा भी पता होना चाहिए जो विड्रॉ का काम कर रहे हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर दोस थिंग्स। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, ये सारे डिपॉजिट्स हैं, आपका इमोशनल बैंक अकाउंट बढ़ेगा। तो जब आप अटेंडिंग टू द लिटिल थिंग्स कर रहे हैं, कीपिंग कमिटमेंट्स कर रहे हैं, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, पर्सनल इंटेग्रिटी कर रहे हैं, और अपोलोजाइजिंग कर रहे हैं इन केस ऑफ अ मिस्टेक, देन यू आर एडिंग टू द इमोशनल बैंक अकाउंट। पर अगर आप डिसरिस्पेक्ट, डिफेंसिवनेस, ओवर रिएक्टिंग, betraying trust, not honoring commitments या threatening attitude adopt कर रहे हैं, तो आपने withdraw कर दिया इमोशनल बैंक अकाउंट से। और अगर withdraw कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? डेफिसिट में चले जाएंगे ना। और ये किस किस कहाँ पे ये चीजें जरूरी होती हैं? ये रिलेशनशिप्स में जरूरी होती हैं। तो रिलेशनशिप्स में या तो आपका अकाउंट, इमोशनल बैंक अकाउंट स्ट्रॉन्ग है तो बहुत मजबूती है, पर अगर डेफिसिट है तो वहां पे आपकी कमजोर रिलेशनशिप हो जाएगी। सो ये भी तो इंटरपर्सनल का ही एक हिस्सा है, because I may be very strong, but if somebody is insisting on withdrawing from my account, तो फिर my relations are going to get strained. So how to maintain the balance is extremely important, and communication plays a very important role there. तो इमोशनल बैंक अकाउंट तो कभी भी एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट, मैं दूसरों को तो कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई भी दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं। सो इफ वी टेक दिस डिसीजन ऑफ adding to others emotional bank account, at least some difference can be made, and then the ripple effect starts, and then things start changing. But अगर मैं ही कुछ नहीं करूंगी, then how can I expect others to change? Is this point becoming clear? What is emotional bank account? तो आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ. We all are carrying an invisible bucket. उस bucket में हमारे सारे emotions होते हैं. अगर मेरी bucket full है, full with positivity, so I will keep giving out positive emotions. बट अगर मेरी बकेट, और अगर मैं दूसरों को पॉजिटिव इमोशंस देती हूँ तो माय बकेट कीप्स गेटिंग रीफिल्ड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. पर अगर मैंने, मेरे किसी ने मुझे किसकी दिख रही है कि बकेट खाली है, बकेट डिपर्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन कैटेगरीज ऑफ बकेट फिलर्स एंड वन कैटेगरीज ऑफ बकेट डिपर्स. तो कभी कभी आपको ऐसे लोग लिखे दिखेंगे जिनकी बकेट पूरी खाली है, or because emotional bucket is empty, they want to rob from others, और वो बांटेंगे नेगेटिविटी, क्योंकि उनके पास पॉजिटिविटी बांटने के लिए ही नहीं है. तो ऐसे लोग भी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, बिकॉज उनके अकाउंट में ड्रॉल्स ज्यादा चल रहे हैं, डिपॉजिट है ही नहीं. सो हाउ डू वी हेल्प? We
put deposit into their account, and when that account becomes rich enough, they also start becoming bucket fillers. I hope this is clear. Please give your feedback so that we know what is going on where. Yes, ma'am. Emotional bank account. So अगर हमें इंटरपर्सनल बातें करनी है, अगर हमें इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाने हैं, इंटरपर्सनल लीडरशिप अडॉप्ट करनी है, तो what should I be? Shouldn't I be taking care of emotional bank account? किसी के साथ भी हो, कलीग्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, सीनियर्स के साथ हो, कहीं भी लेवल पे हो, अगर if I take care of this emotional bank account, you will see things changing in a big way. Yes, thank you. Thank you so much. Your feedback, like I said, most important. The second point, think win-win. Think win-win क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम आधे से ज्यादा टाइम लूज और विन की बात सोचते हैं. हम सोचते हैं तुम हारे मैं जीता, मैं हारी तुम जीते, ऐसा टाइप का चलता है ना. तो यहाँ पे देखिए कंसिडरेशन एक साइड में दिखा रहा है, एक साइड में करेज दिखा रहा है. तो अगर मैं कहूं कि यू लूज आई विन, दैट मीन्स आई एम शोइंग वेरी आई एम नॉट अ गुड पर्सन. मतलब लूज विन होना ही नहीं चाहिए. मैं हार जाऊं तुम जीत जाओ, तो ये तो बहुत हाई लेवल ऑफ कंसिडरेशन हो गया ना, कि मैं हार गई आप जीत गए, पर मेरे में करेज नहीं है. आई एम वेरी कंसिडरेट, आई एम लेटिंग यू विन, but I have no courage to stand up for myself and say that I also want to win. No, I'm happy you being winning, you being the winner, क्योंकि मैं बहुत मेरे अंदर consideration है. That is not correct. दूसरा टाइप का होता है कि I will not win nor will I let you win. That is again very bad. क्योंकि फिर न तो consideration है ना courage है, दोनों ही हार जाएंगे. एक होगा कि I will win and you will lose. That is, I have a lot of courage, but I will make sure that you lose. I have no consideration for you. And the fourth option is where I win, but I have the courage and consideration so that you also win. Both the parties win. There is no one losing at the end of it. When both are winners, that communication will always be a big success. बट अगर मुझे कम्युनिकेट करके किसी को हराना है या किसी को जिताना है या खुद ही को हारना है या दूसरे को जीतने देना है या दोनों को हारना है, then that communication is meaningless. Communication at the end of it should be such, or any interaction that we are carrying out should be such that both emerge as winners. And for that, one very important thing is to be a good listener. अब आप बोलेंगे लिसनिंग में क्या है? लिसनिंग तो हमें बचपन से आती है. लिसनिंग कौन सी बड़ी चीज है? तो लेट मी टेल यू, जस्ट अ मिनट. देयर आर different kinds of listeners. Different kinds of listeners. So is this lose, win, win, lose, 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 win, win clear? What are we Yes, talking ma'am. about? Huh? Does this make sense? Okay. Okay. तो इसके लिए win-win situation के लिए हमें क्या important है? To be good listeners. अब ये मैं अपने सामने की बात बता रही हूँ कि मैंने दो लोगों को, they are having a conversation. आप बातें चल रही हैं, और वो conversation कैसा चल रहा है? Person A और person B, they are talking to each other, but nobody is listening. A बात कर रहे हैं तो B ये वेट कर रहे हैं कि A कब बंद करेंगे और मैं कब बोलूं. B बोल रहे हैं तो फिर से A नहीं सुन रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि ये कब बंद करेंगे, मैं कब बोलूं. Because they both are interested in talking. Nobody is interested in listening.
And when listening is not taking place, understanding cannot take place. क्योंकि जब सुन ही नहीं रहे तो समझ कैसे रहे, समझ ही नहीं रहे, फिर they are not listening to each other, they are not understanding to each other. तो I am going to share with you कि आप जब हम बात करते हैं तो हम किस लेवल पे बातें करते हैं और हम किस लेवल पे समझते भी हैं. So do you want to know about this? अभी तक का प्लीज क्या क्या चीजें क्लियर हुई, पहले आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक देंगे, then I'll tell you levels of listening and how we communicate. हमने अभी तक क्या क्या किया? We understood the communication process. पहले तो हमने वहां से शुरू किया. फिर कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? इंट्रा एंड इंटरपर्सनल. तो हमने पहले समझा इंट्रा क्या है, इंटरपर्सनल क्या है. फिर हमने देखा वो दोनों कनेक्टेड कैसे हैं, है ना. तो दोनों तो इधर ही हो रहे हैं ना, दिमाग तो हमारा एक ही है, वही इंट्रा भी कर रहा है, वही इंटर भी कर रहा है, तो कहीं बाहर से तो हो नहीं रहा है वो. सो आई एम अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ माई ओन ब्रेन. फिर हमने देखा कि अब हमें लीडरशिप की तरफ जाना है, तो आई हैव टू बिकम अ लीडर इन इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. सो हाउ डू आई डू इट? सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट इज टू बिकम. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? टेल मी. इससे पहले हमने क्या किया? The emotional bank account. हाँ, फर्स्ट स्टेप इज टू टेक केयर ऑफ द इमोशनल बैंक अकाउंट, है ना. तो पहला हमने वो किया. दूसरा हमने किया विन विन. तो अब 2 पॉइंट्स तो हमने कवर कर लिए. अब हम तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं कि जब हम किसी की भी बातें सुनते हैं तो हम इमीडिएटली कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं. कोई मुझे बता सकता है, अगर आपसे कोई कुछ बात कह रहा है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको? हम बन जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स, या हम बन जाते हैं इवैल्युएट करने लग जाते हैं. हम या तो ऐसे सोचते हैं कि इनके साथ अग्री करना चाहिए या डिसअग्री करना चाहिए, या फिर हम क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं हमारे फ्रेम ऑफ माइंड से. ओ ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा भी तो कर सकते थे, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं. प्रोबिंग, और पूछना, है ना. या फिर हम उनको सलाह देने लग जाते हैं, एडवाइस, कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा, है ना. और या फिर हम अपने ही तरीके से, जो मेरी इंट्रा टॉक्स चल रही हैं उसके हिसाब से मैं ट्राई टू फिगर पीपल आउट कि भाई ये ऐसा है, इनका मोटिव ये है, इनका बिहेवियर ये है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये. तो ये हमारे यूजुअली 4 रिस्पॉन्सेस होते हैं. पर यहाँ पर अभी तक लिसनिंग नहीं आया. तो लेवल्स ऑफ लिसनिंग समझना बहुत जरूरी है. और लिसनिंग और भी ज्यादा टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्टूडेंट्स and many times they are coming to us with their problems and challenges. Now, are we listening to them empathetically, or are we listening to them attentively? So एक तो ये हमारे लिए हो गया कि how are we listening to them. दूसरी चीज है how are students listening to us in the classroom. आपके पास सब बच्चे तो एक जैसे नहीं सुनने की कैपेसिटी रखते हैं, अलग अलग लेवल पे सुनते हैं लिसनर्स. तो कोई मुझे बता सकता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिसनर्स में कैसे टाइप के किस तरह से सुनते हैं? एनीवन? कोई भी? क्या सबके पास लिसनिंग कैपेसिटी एक सी होती है, या डिफरेंट होती है, या कैसे होती है? आपकी क्लास में बच्चे क्या सब आपकी सुनते हैं, या नहीं सुनते हैं, या कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं? कैसा होता है? एनीवन? मैडम कोई बच्चा ऐसा है कि हमने अगर कुछ पढ़ाया है तो उसका तुरंत में रिप्लाई देते हैं बोलकर. कुछ ऐसे हाँ, हैं कि चेहरे पे सिर्फ एक्सप्रेशन लाते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं कि कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि इनको नहीं समझ में आ रहा है, यानी अपना हाँ, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है. तो ये जो सुनने वाले जो है कैसा रिस्पॉन्स देते हैं उसके ऊपर से हमें समझ में आता है कि हम जो बोल रहे हैं वो उनको कितना समझ में आ रहा है. हाँ. और उसके लिए हमें भी जाना चाहिए समर ब्लैंक.
एम्पैथेटिक लिसनर टू, हाँ। तो हमें ये समझना चाहिए कि मेरी क्लास में जो सुनने वाले बच्चे हैं वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिसनिंग है। कुछ तो सुन ही नहीं रहे, दे आर नॉट लिसनिंग एट ऑल। वो सुनने की मतलब दे आर नॉन लिसनर्स, उनको लिसनिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ होंगे जो पार्शियली सुन रहे होंगे, जो आधी बातें सुन रहे हैं आधी बातें नहीं सुन रहे, है ना। कुछ होंगे, देखिए, प्रिटेंडिंग लिसनिंग, दे नो इग्नोरिंग, मेकिंग नो एफर्ट टू लिसन। इन ऐसे बच्चों को पहचानना बड़ा इजी होता है, बिकॉज दे शो, इट शोज ऑन देयर फेस दैट दे आर नॉट लिसनिंग, तो उनके चेहरे पे ही दिख जाता है। सेकंड वाले बड़े डेंजरस होते हैं, बिकॉज दे प्रिटेंड टू लिसन बट दे आर नॉट लिसनिंग। थर्ड वाले जो हैं वो खाली कॉन्वर्सेशन का वो हिस्सा सुनेंगे जिनको वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी वो कुछ नहीं सुनेंगे। और कुछ टाइप के ऐसे होंगे जो अटेंटिवली सुन रहे हैं, पेइंग अटेंशन एंड फोकसिंग ऑन व्हाट द स्पीकर सेज एंड कंपेयरिंग दैट टू योर ओन एक्सपीरियंसेस। सो ये अटेंटिव लिसनर। बट हम जिन लिसनर की बात कर रहे हैं वो एम्पैथेटिक लिसनर्स। Empathetic listeners are not only listening for the words, they are listening for the feeling. तो खाली शब्दों को हमें नहीं सुनना है, वो शब्दों के पीछे भाव क्या है, उन भाव को भी जब अगर हम समझ पाते हैं तो एक्चुअली आई एम अ गुड लिसनर। सो जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स खाली 7% है, बट उसी के साथ उनको किस टोन में बोला गया, किस बॉडी लैंग्वेज में बोला गया, अगर वो मुझे समझ में आ रहा है, आई एम लिसनिंग टू द फीलिंग, देन आई एम एक्चुअली बीइंग एम्पैथेटिक। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। एक बार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो जैसे किसी बच्चे का फोन आया, I got a phone call and around 6 p.m. at night and 6 p.m. in the evening, and the child and the student was very perturbed. तो वो क्या कर रहे हैं? Ma'am, I'm feeling very upset. So, okay, what should I do? Now, I'm feeling very upset में मैंने ना probe किया, ना इवैल्युएट किया, ना एडवाइज किया, ना इंटरप्रेट किया। नहीं तो हमारे क्या यूजुअल होता है रिएक्शन, इफ समबडी सेज आई एम फीलिंग अपसेट, तो हम लोग क्या करते हैं कि एकदम से, अच्छा तो तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए, या तो मैं इवैल्युएट करने लग जाऊंगी, या मैं एडवाइस देने लग जाऊंगी, यू शुड गो एंड सी द डॉक्टर, या मैं पूछने लग जाऊंगी अच्छा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या मैं अपने जजमेंट बनाने लग जाऊंगी। But I didn't do anything of those. I only reciprocated the feeling. And I said, उसी शब्दों को मैंने उसी फीलिंग के साथ रिफ्रेज करके बोला, oh, you are not feeling well. Okay. Nothing else. She said, I want to talk about it. Okay, talk about it. वो बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलती रही, 60 minutes बोलती रही. I said, okay. And what am I doing? I'm only empathetically listening. And then at the end of it, I said, okay, so should we go and visit a doctor? No, 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 no. I'm already feeling well. So did I give any advice? Did I evaluate? Did I probe? Did I interpret? Nothing. What did I do? I just listened empathetically. So listening for the feeling of despair, feeling of dejection, feeling of sadness. I just looked for that feeling. I just listened to that feeling and I understood what the person was trying to say. So empathetic listening is listening and responding with both the heart and mind to understand the speaker's words, intent, and feelings. So when we understand the feelings with which words are spoken, then we are empathetic listeners. Only attentive listening is not enough for today. Are we getting the point? What is empathetic listening? What is empathy? Anybody? What is empathy?
Empathy is, anybody, what is the difference between sympathy and empathy? मैम किसी की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना इज एम्पैथी. Absolutely. To understand what the person is going through, feel the feelings of others. Yes, being there with them in that feeling is empathy. And empathetic listening is listening for the feeling. So, with what intent this is being said? What is the expression behind what is being said? So, heart and mind. So, I always say we think too much from our mind, we don't think from the heart. So, when we listen to the mind and the heart in speaker's words, then actually we are empathetically listening. Most of the times we are attentively listening because the brain is attentive. So intellectually we may understand everything, but heart, are we understanding the feeling behind it? That is important. Hope this is clear. Empathetic listening. So the 3 points we have done. Do you remember the first point? What was the first point? Interpersonal and interpersonal leadership. What was the first point? The emotional bank account. Yes. The second point? Think win-win. Yes. And third point? Pathetic listening now. But Empathetic listening. And what is coming next? perceptual position. Absolutely. So perception, we had done perception, organization of ideas in our own head. The perception is my way of looking at things, है ना? So perceptual positions when we are talking about. So first person, when I'm talking, I will talk about how I'm looking at things. The other person, how you are looking at things, है ना? तो मैं अपने नजरिए से बात करूंगी तो मुझे अपनी चीजें दिखाई देंगी, पर मुझे आपका नजरिया नहीं दिखेगा. और थर्ड पर्सन इज हाउ समवन एल्स वुड सी थिंग्स. So there are always, so whenever we change the perceptual position, I'm not looking at the situation from my point of view, from the second person's point of view, and from the third person's point of view, then it gives me the correct perspective. So I'll give you an example. ये देखिए. Who is right in this picture? Who is right and who is wrong? Both are wrong. Both are right. But pata chalega both are right. I will keep fighting that I am right. The other person is fighting I am right. So what should be done? Both are right in their own perspective. So third person is looking. हम क्योंकि third person की तरह देख रहे हैं. ये first person बोल रहा है 4, second person बोल रहा है 3. Third person, हम third person की तरह देख रहे हैं तो हम बोलेंगे both are right. है ना? But ये दोनों ने क्या करना चाहिए? What should they do? So, what should they do? They have to change their perceptual positions. 4 वाले ने 3 की तरफ जाके देखना चाहिए. Yes. And 3 वाले ने 4 की तरफ जाके देखना चाहिए. Then they will be able to understand each other's point of view. तो कितनी बार जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, so both the parties think that they are correct, but third person बोलेगा नहीं, both are wrong, क्योंकि थर्ड पर्सन को दोनों दिख रहे हैं कि ये भी गलत है वो भी गलत है. तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? द पार्टीज शुड इंटरचेंज देयर roles and see what is going right and what is going wrong. So that is again a very important factor of interpersonal leadership. तो perceptual positions जो हैं वो भी हमारे दिमाग में हैं.
all this is taking place in our head. Perceptual position is in my head. Think win-win is in my head. Emotional bank account is in my head. Empathetic listening is in my head. So if I'm changing for interpersonal, I'm automatically changing for intra also. Or if I'm changing for intrapersonal, then I'm automatically changing for interpersonal, because both are closely connected. Are we getting this? So if I'm strict with myself that only this is correct, I'm not ready to see the other person's point of view, then in my head also I'm not seeing for myself, but I'm open to others' point of view. Interpersonal may, then intra maybe I'm open to more flexibility. Yes? Okay. So the 4 points we have shared, फिर से we will repeat. One was emotional bank account, think win-win, empathetic listening, and perceptual position. So what is happening here? Can anybody explain this picture? What is happening in this picture? मैडम यहाँ सबके आंखों पे मैम द पट्टियां हैं। पर्सन जो फील कर रहे हैं टच करके, यहाँ वो लोग टच से परसीव कर रहे हैं, जिनको जो पॉइंट एलिफेंट का टच हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और परसीव कर रहे हैं। इट्स हाँ, परसेप्शन उनके ऑन द बेसिस ऑफ टच। हाँ, तो उनको जो महसूस हो रहा है उनके लिए वही सही है ना? जो सब ब्लाइंड फोल्डेड है, तो जो ईयर को टच कर रहा है वो क्या बोल रहा है कि एलिफेंट इज अ फैन। कोई बोल रहा है जो स्किन को टच कर रहा है वो बोल रहा है इट्स अ वॉल। कोई पूंछ को टच कर रहा है बोल रहा है इट्स अ रोप। कोई पैरों को टच कर रहा है बोल रहा है इट्स अ ट्री। कोई बोल रहा है इट्स अ स्नेक। कोई बोल रहा है इट्स अ स्पेयर। तो सब अपनी अपने तरीके से तो सही बोल रहे हैं, बट ये सब पार्ट्स हैं। And elephant is the integration of all the parts and much more than that. And the whole is much more than the summation of parts. तो अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से बहुत लिमिटेड नजरिए से छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, पर अगर हम अपने आंखों की पट्टी हटाकर अगर अब आप इनमें से कोई भी या सारे लोग देखेंगे तो दे विल रियलाइज दे वर लुकिंग एट अ वेरी लिमिटेड पोर्शन. It is actually much more. The elephant is a complete animal and they were looking at a fraction of it. है ना? तो अलग अलग पार्ट्स हैंगे, और पार्ट्स का जब इंटीग्रेशन, तो जैसे हम किसी भी यूनिट में अगर हम काम करते हैं तो हम सब एक एक यूनिट का एक एक फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। तो या तो हम एक छोटा छोटा फ्रैक्शन ही रह जाएं, और या फिर वो सारे fractions come together and the sum becomes much larger than the integration of the parts. That is synergy. That is what I'm coming to next. ये क्लियर हुआ क्या अभी जो ये पॉइंट किया हमने कि ये सब अपनी लिमिटेड विजन में छोटे छोटे पोर्शंस को देख रहे हैं और वो पार्ट्स हैं, but the totality is much more than what is obvious, right? What we with our limited vision can see. So similarly, जो हम सिनर्जी की बात करते हैं, जैसे हमें लगता है कि हम एक एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है ना, किसी भी यूनिट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं भी कॉलेज में, but synergy is when the combined power of a group of things, when they are working together, which is greater than the total power achieved by each working separately. Exactly what is happening here. Each working separately, say, total power is much, much more. So, synergy कब achieve होती है? Synergy, has anyone heard of synergy before? किसी ने सुना है? तो जो भी हम इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कर रहे हैं, इस सब से मतलब क्या है इसको करने का? वी हैव टू क्रिएट अ सिनर्जी
where the combined power of a group of things, wherever we may be, in whichever unit we may be, एक डिपार्टमेंट आपका यूनिट हो सकता है, आपका फैमिली आपका यूनिट हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल एक यूनिट हो सकता है, आपका कॉलेज इंस्टीट्यूशन एक यूनिट हो सकता है. तो जो आपकी कंबाइंड पावर है उस यूनिट में मेंबर्स की, when they are working together with great intra and interpersonal skills, then everything, the combined power becomes greater than the total power achieved by each working separately. मैं अकेले अकेले वो काम नहीं कर सकती थी जो कि मैं सबके साथ कर सकती हूँ because of great interpersonal skills. So many times synergy is missing because interpersonal connections are missing. Do you agree? डू यू अग्री कि सिनर्जी जहां क्रिएट होनी चाहिए, जो एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए, सिमिलर एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए, इट डज नॉट गेट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. इंटरपर्सनल स्किल्स आर नॉट वर्किंग. सो जो आपका वहां पे पावर क्रिएट होनी चाहिए, दैट पावर गेट्स डिमिनिश्ड बिकॉज वी कैनॉट function it harmoniously with each other and because of our interpersonal skill. Getting this point? So intrapersonal and interpersonal ko, why should we take care of our interpersonal so that we can create this synergy? और synergy में क्या होता है कि synergy में we empower each other, we work for with each other. तो जैसे अगर कोई भी टीम है या कहीं भी आपका ग्रुप है, तो उसमें नॉट एवरीवन इज गोइंग टू बी इक्वली टैलेंटेड इन ईच एरिया. डिफरेंसेस होंगे. तो वैल्यूइंग डिफरेंसेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग दैट दिस पर्सन इज गुड इन दिस एरिया बट इसमें शायद थोड़ी लिमिटेशन हो सकती है, तो वो सिनर्जी को क्रिएट करता है. वो भी इंटरपर्सनल में बहुत इंपॉर्टेंट आता है. सो लेट्स सी. So इसमें similar very important thing is कि 1 plus 1 is not always equal to 2. 1 plus 1 is equal to 11, 111, 1011, 1,11,000. कुछ भी हो सकता है that power. And that is the beauty of it. So imagine there's so much of human resource. But अगर सबकी power tap नहीं हो रही है, तो it is so unfair. Because synergy jahan create hogi, wahan results will just multiply manifold. So synergy is the benefit derived from combining two or more elements so that the performance of the combination is higher than that of the sum of the individual elements. So 1 plus 1 is not equal to 2. That is why even in families, there may be 4 members, but 1 plus 1 plus 1 not equal to 4. They may be equal to 444. Itna power ho jata hai family mein because they are working in perfect synergy. Or kabhi-kabhi not even 4, they become equal to 0 because nobody is working in cooperation with the other. तो ये सब interpersonal की वजह से हो रहा है. That is the point. Do you agree with this? Do you agree with this, Synergy? Yes, okay. Would you like to share something from your side when it comes to synergy? Because see, human potential is unlimited. है ना? We all have a lot of potential, but वो potential सामने नहीं आ पाता है because of our own limitations that we set for ourselves. But when we empower each other, when we encourage each other, then such synergy can be created where we all can realize that untapped potential which is lying hidden within us. So important thing is valuing differences. अब इंटरपर्सनल में अगर हमने वैल्यू डिफरेंसेस नहीं किए तो हर चीज तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगी ना भाई. डिफरेंसेस आर देयर, पीपल आर डिफरेंट, वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो हाउ डू आई वैल्यू डिफरेंसेस? सो वैल्यूइंग डिफरेंसेस इज व्हाट रियली ड्राइव्स एनर्जी. और उसमें आपको 4 पॉइंट्स हैं
3 points: mental, emotional, and psychological differences, or do you wish everyone should agree with you so you could all get along? Many people mistake uniformity for unity, sameness for oneness. One word: boring. So differences should be seen as strengths, not weaknesses. They add zest to life. क्योंकि आप अब ये होगा कि हम एक टीम में हैं, but how do we get along with each other? This person is so different, this person is so different. So there was a match going on. Sports में भी क्या होता है, या क्रिकेट टीम में भी क्या होता है, कोई भी स्पोर्ट्स देखे, टीम में सब सिमिलर टैलेंट वाले तो नहीं आएंगे. They all are differently gifted, but when they work together as a team, the team will win. But if each one thinks ki I am important, important, yes, institution should work with synergy. Absolutely, absolutely. So this synergy can only be created when we are good with interpersonal skills. That is the basic. When we are depositing into others' emotional bank accounts, नहीं तो वो synergy missing हो जाती है. So each person holds so much power within themselves that needs to be let out. Sometimes they just need a little nudge, a little direction, a little support, a little coaching, and the greatest things can happen. And that is the true power of being an empowered person, because we can encourage, we can cherish, we can treasure the person who is in front of us and empower that person also. That is the beauty of it. Okay, so when teams are there, there has to be collaboration. अब interpersonal skills, खाली मैं interpersonal skills में I'm very good, but I'm not collaborating with others, then what's the point? Then put this skill into practice and collaboration with others. This is the 21st century skills, teamwork, because हम खाली अपनी अपनी units में, अपने अपने orbit में तो नहीं function कर सकते. We have to work in collaboration with each other. So that is why this becomes very, very important. And a team is where together everyone achieves more. So from intrapersonal and interpersonal, we have come to synergy and team. Do you think all this is connected? Do you think all this is meaningful? Yes, ma'am. Yes? Okay. So can anybody share what we have done from the beginning today? Because now we are coming to the close of it. And before we close, if anybody would like to give a quick recap, then we can quickly, we have done too many things from the beginning. So maybe you can just share your recap. And I've been talking Hello. too much. So I would, yes, I would love to listen to your points of view. Yes, please. Ma'am, we have learned about interpersonal and intrapersonal skills and what is communication. And there is a difference between communication and talking, which has very beautifully explained. You also Yes. told that behavior is communication. We have come through different types of example of intrapersonal and interpersonal communication. Then we learned about perception. What is perception? Later on, ma'am, we have came towards intrapersonal and interpersonal leadership, which has 4 points which we have explained very beautifully. That is emotional bank account. Think in the situation of win-win, empathetic listening, and perceptual position, and types of responses we have learned. And one more thing, ma'am, level of listening, how people listen, and what is the level of listening, perceptual position we have learned, and at last we have learned about synergy. So what is synergy? Is synergy clear? Yes, ma'am, it is a combination of actions.
कि छोटे छोटे ग्रुप्स में जो एक्शंस होते हैं उसको कंबाइन करके जो रिजल्ट आएगा, दैट इज सिनर्जी। तो जैसे अगर एक डिपार्टमेंट में या एक जैसे कहीं भी आपकी क्लास में भी सपोज 50 चिल्ड्रन आते हैं, है ना, तो 50 चिल्ड्रन 1 + 1 + 1 + 1 50 चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स आर देयर, बट अगर उन 50 स्टूडेंट्स में बहुत सारा पोटेंशियल है और थ्रू आवर इंटरपर्सनल स्किल्स अगर हम उस पोटेंशियल को सामने ला सकते हैं तो वो 50 हमारे 500 के बराबर पावरफुल बन सकते हैं, दैट इज सिनर्जी। यस मैम, यस यस, सो यस मैम, जहां पे उनका जो टोटल है बिकम्स ग्रेटर देन द सम, सम and that can only take place when we are very good with our interpersonal skills, because communication से ही तो हम उनको आगे encourage कर सकते हैं और उनको empower कर सकते हैं। So imagine if your institution has so many students and synergy is created in each classroom between the staff members everywhere, then the potential that will come out is going to be so powerful. And that is why we are in this education sector, actually, to bring out the potential in each student who's in front of us and to bring out the potential in our own personality also, right? So that is, so together everyone achieves more, and we are really a strong team where everyone is achieving much more because we are a team. Alone, I wouldn't have been able to do it because I have such a wonderful team that I'm able to achieve so much more. That is the beauty of being a good team member. So ये interpersonal skills का direct manifestation है when we have good teams. Okay, I hope this point is clear कि खाली हमें theoretically तो we will know what is intrapersonal, what is interpersonal, everything I'll understand very well. But where do I put it into practice and how do I put it into practice? I put it into practice when I build great teams around me, when I empower others, yes, that is where, this interpersonal and intrapersonal is coming into practice. All right. So I'm so grateful to you for sharing your feedback. Thank you so much. Thank you. So that is the beauty of it. Ab isme one more last point I want to share is so many times it happens that we want to give feedback. Kyunki sub encouragement, empowerment, all this is very good. But there are certain corrections measures also which have to be shared from time to time. Kyunki hum sabko ऐसा पॉइंट आता है कि भाई आपको बताना पड़ता है कि आपको ये एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो थिंग्स विल नॉट रीच वेयर यू वांट देम टू रीच. सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. So you are giving feedback to somebody. So how should you give feedback so that the team, the interpersonal, everything remains intact? Okay, so have you heard? Okay, tell me, what do you see in a sandwich? सैंडविच में क्या होता है? Have you heard of the term feedback sandwich? Hello, am I audible? Yes, madam, you are audible. बहुत सारी Yeah. चीजों को मिला के सैंडविच होता है मैडम। बहुत सारी चीजों, तो उसमें क्या होता है, एक लेयर होती है, एक स्लाइस ब्रेड की होती है, एक नीचे एक स्लाइस होती है, उसके ऊपर कुछ फिलिंग रख दी जाती है और एक और स्लाइस से उसको बंद कर दिया जाता है। तो दो स्लाइसेस के बीच में कुछ अच्छी सी फिलिंग होती है, वेज फिलिंग हो सकती है, आपकी मनपसंद मेयो वगैरह कुछ भी हो सकता है, और वो दैट बिकम्स अ सैंडविच एंड इट्स टेस्टी एंड वन कैन ईट इट, है ना, दैट इज व्हाट अ सैंडविच इज. पर वो जो दो स्लाइसेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसके बीच में फिलिंग कुछ भी हो सकती है, बट बिना दो स्लाइस ऑफ ब्रेड के आपकी सैंडविच नहीं बन सकता. तो वैसे ही आपका फीडबैक सैंडविच है. जब आपको किसी को करेक्शन के लिए सजेशंस देने हैं
तो वो कैसे, वो भी तो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स को डैमेज कर सकता है कंप्लीटली, कि सब एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, जब तक हम एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, सडनली मैंने उनको बोला कि आपको इस एरिया में इम्प्रूव करना है, और पता चला उस दिन से हमारी बातचीत बंद हो गई। तो वो कैसे हम बताएंगे किसी को? तो उसके लिए ये फीडबैक सैंडविच हमेशा याद रखिए। तो फीडबैक सैंडविच में हमें क्या करना है, पहले पॉजिटिव, जैसे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, वैसे ही आपने शुरू का पॉजिटिव और एंड का पॉजिटिव रखना है, और बीच में करेक्शन, जो भी सजेशंस है वो दीजिए। तो जब दो तरफ से पॉजिटिव रहेगा तो बीच का आपका करेक्शन वेलकम किया जाएगा। अगर हम करेक्शन से ही शुरू करेंगे और करेक्शन से ही खत्म करेंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। लोग, पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन। और आजकल तो सबका शॉर्ट लिसनिंग स्पैन कहते हैं 10 सेकेंड्स हो गया है। आप लोग इतनी देर से सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आजकल नहीं सुनते हैं लोग। तो हम, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स बिकमिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड शॉर्टर। तो अगर हमें इसको, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, योर कांस्टेंट फीडबैक हैज रियली बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग। सो आपको बहुत केयरफुली चोजन वर्ड्स के साथ जो भी आपकी अच्छी क्वालिटीज हैं आपको जिस पर्सन की, उससे शुरू कीजिए। सपोज जैसे सम स्टूडेंट को कहना है तो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आई कैन सी दैट यू पुट इन इनफ एफर्ट्स, however you need to work a little more in your maybe this particular subject, because you are not getting as much as you should be, or you deserve so much more. Positive feedback, I'm sure you're going to start with a new timetable, and you're going to be more sincere, you're going to plan in a better way, या जो भी है पॉजिटिव आपका जो भी फीडबैक होगा आप उससे क्लोज कीजिए। तो आपका सजेशन भी चला गया और अगले इंसान को वो लगेगा भी नहीं कि मेरा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। जैसे यहाँ पर आई जस्ट वांट टू शेयर वन स्मॉल स्टोरी, कि एक फ्रॉग्स, बहुत सारे फ्रॉग्स थे, उन्होंने एक बहुत टॉल माउंटेन, टॉल टार को सोचा कि हम क्लाइंब करेंगे। अब जैसे ही उन्होंने टार पे क्लाइंब करना शुरू किया, ऑडियंस बहुत सारी देख रही थी, उन्होंने कहा यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। और वो सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद नीचे गिरते गए और नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया। एक कर पाया जो कि डेफ था, जिसने सुनाई नहीं, तो वो उसने क्रॉस कर लिया। पर अगर सब लोग बोलते रहे कि तुम कर पाओगे कर पाओगे कर पाओगे, सिनेरियो को चेंज करें, तो जो नहीं कर पा रहे थे वो भी टॉप ऑफ द माउंट टावर तक पहुंच गए। दैट इज द पावर ऑफ वर्ड्स। तो अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। पर अगर हम बोलते हैं तुम कर पाओगे, पॉजिटिव फीडबैक है, बट करेक्शन इंप्रूवमेंट ये है और तुम ऐसा कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो बच्चा, वो पर्सन वो करके भी दिखा देता है। So that is the power of communication, and that is the power of feedback sandwich, and that's the power of interpersonal. So leaders create leaders. पहले हम interpersonal और interpersonal leadership को खुद पे adopt करके we become leaders, so that we can create more leaders. We become aware, we practice, we become experts in this, and then we teach others. We change everything around us. So that is the power of being a leader. And with that, we come to the close of today's session. If there's anything you want to ask, thank you so much for being so patient. Deepest gratitude to each one of you. Thank you so much. If you have questions, please, we have 2-3 minutes. We can take those questions, or anything you have to share from your side. Thank you so much. आप लोग, you are very kind and generous. I must say that you are very. Thank you so much. That is Thank you so much, madam, for yet another wonderful session, as always. किसी को कुछ पूछना है और any feedback for the session? कैसे लगा आपको मैडम का लेक्चर? लेक्चर मतलब डिस्कशन? discussion. Yeah. Was great, ma'am. Okay. Thank you so much. Anything आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज शेयर, कि मैम ऐसा भी हो सकता था, कुछ भी आप
फीडबैक आप लोगों का थ्रू आउट इतना पॉजिटिव रहा. आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन फॉर दैट. सो थैंक यू सो मच. ओके, नो क्वेश्चंस, नो फीडबैक. नो सो गए क्या सब क्वेश्चंस. लोग? सो गए क्या सब लोग? सब लोग ओके, हैं. प्रशांत सर का मैसेज है जी. मैं चैट आई कांट सी चैट सेक्शन में यहाँ पे. आई वुड लाइक. मैडम, इन द फूटर रीजन यू कैन सी. I can't see in the where. I can see chat. I can see the participants, but I can't see the पार्टिसिपेंट्स chat. के बाजू में ही है मैडम, एक आइकॉन दिखेगा आपको और टेक्स्ट मैसेज जैसे आइकॉन है. ओके, नो क्वेश्चंस. बाकी पार्टिसिपेंट्स वर्बली बताइए, सब मैसेजेस करके बता रहे हैं. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक. Okay, I got it finally. यस यस. ओके, I would love to read the chat. Soft मैडम ने skills. इतने अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में बताया कि कुछ भी अभी पूछने की और क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है. अरे वाह, गुड. अब इसको उसको चलिए, प्रैक्टिस करना है अब. प्रैक्टिस कर, इम्प्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है मैम. हाँ, ये पोस्ट तो लंच आज हमने. पोस्ट लंच सेशन में इट वाज वेरी एनर्जेटिक लेक्चर. थैंक यू सो मच. अब इसको प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्किल्स शार्पन होती जाएंगी, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स आर ऑल बिहेवियरल स्किल्स. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. Yes, madam. Practice So करते now रहिए. I request, yeah, now I request Dr. Rupa Dande madam to kindly propose vote of thanks. Rupa madam. Yes, thank you, ma'am. Good afternoon, one and all. We are gathered here for this wonderful session on interpersonal and intrapersonal communication by Mrs. Divya Lakhera, ma'am. She makes us understand the process of communication in which body language make high impact and one should be a good listener also. Interpersonal and intrapersonal leadership make communication effective through the emotional bank account, think win-win, empathetic listening, perceptual position, and also with this energy factor. We should also value differences as every individual is very different in their own manner. Today's world, it's important to work in a team. So we should always try to collaborate ourselves with the team. And the last part was feedback part, which is actually one of the most important factor through which we can evaluate ourselves. So we should never forget about the feedback. And thank you, ma'am. Thank you once again for your actually a very important session. So through which we can always try to evaluate ourselves and observe ourselves and to make changes in ourselves also. Thank you, ma'am. Also, I would like to thank you, Dr. Preeti Dharmik, ma'am, once again to give me opportunity to give vote of thanks. Thank you, ma'am. Thank you so much, Dr. Rupa ma'am. Thank you, Divya ma'am. Thank you, Preeti ma'am. Thank you all the wonderful Yes. participants. Have a great evening. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you, ma'am. Yes. Happy Women's Madam, Day, परसों madam. अपना, yeah, Happy Yep. Women's Day. Yeah. Happy Women's Day. Yes, to all the amazing women. And here we are celebrating Holi today. Yes. Yes, ma'am. Okay, bye bye. Take care. Bye, ma'am. Bye. Thank you. Thank you all the participants. Now you can take 5 minutes refreshment break. Don't leave the meeting. Resume the meeting within 5 minutes. आपको अगर refreshment break चाहिए होगा, bio break, you can take it for 5 minutes. हम आगे की चीजें शुरू करते हैं 5 मिनट के बाद. ठीक है? Stay connected. मीटिंग को लीव मत करिए. मैम वो Yes. गूगल क्लास